Hello everyone. SSCGD 2025 third shift analysis February 4 and some important questions. Dwaram Venkateswamy Naidu was a famous musician associated with which instrument? द्वारम वेंकटस्वामी नायडू किस वाद्य यंत्र से जुड़े प्रसिद्ध संगीतकार थे? The answer for this question is option C, violin. What is the official language of the Myanmar? म्यांमार की आधिकारिक भाषा क्या है? The answer for this question is option B, Burmese or Burmi. द्वारम वेंकटस्वामी नायडू is known for his contribution to which field? द्वारम वेंकटस्वामी नायडू किस क्षेत्र में अपनी योगदान के लिए जाने जाते हैं? The answer for this question is option B, classical music, शास्त्रीय संगीत. Which musical instrument is associated with the Pandit Ravi Shankar? पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र से जुड़े थे? The answer for this question is option C, sitar. हरिप्रसाद चौरसिया is a famous maestro of which Indian musical instrument? हरिप्रसाद चौरसिया किस भारतीय वाद्य यंत्र से उस्ताद है? The answer for this question is option B, flute, बांसुरी. Which instrument is commonly used in Hindustani classical music and played by Ustad Bismillah Khan? हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में प्रचलित कौन सा वाद्य यंत्र उस्ताद बिस्मिल्लाह खान द्वारा बजाया गया था? The answer for this question is option B, शहनाई. Who is the current chief minister of तमिलनाडु? तमिलनाडु के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन थे? The answer for this question is option B, option C, M.K. Stalin. Who is the present tourism minister of India in 2024? 2024 में भारत के पर्यटन मंत्री कौन है? The answer for this question is option B, गजेंद्र सिंह शेखावत. The Jungad rock inscription of Rudraman is located in which Indian state? रुद्रमन का जूनागढ़ शिलालेख भारत के किस राज्य में स्थित है? The answer for this question is option B, गुजरात. The Jungad rock inscription is situated near which hill? जूनगढ़ शिलालेख किस पहाड़ी से पास स्थित है? The answer for this question is option C, गिरनल हिल. गिरनर पहाड़ी में स्थित है. The Jungad inscription of Rudramana is written in which language? रुद्रमन का जूनागढ़ शिलालेख किस भाषा में लिखा गया है? The answer for this question is option A, संस्कृत. संस्कृत भाषा में लिखा गया है. The Jungad inscription of Rudraman provides information about the repairs of which lake? रुद्रमन का जूनागढ़ शिलालेख किस झील की मरम्मत के बारे में जानकारी देते हैं? सुदर्शन लेक. सुदर्शन लेक is the correct answer. Under which article of the Indian Constitution is the appointment of the state governor described? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल की नियुक्ति का वर्णन किया गया है? The answer for this question is option B, article 155, अनुच्छेद 155. Who appoints the governor of an Indian state? भारतीय राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं? The answer for this question is option C, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. भारत के राष्ट्रपति करते हैं. What is the main objective of the Rainbow Revolution in India? भारत के इंद्रधनुष क्रांति रेनबो रेवोल्यूशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? It is very important question. The answer for this question is integrated development of agriculture. कृषि का एकीकृत विकास के लिए रेनबो रेवोल्यूशन का it is the main objective of the Rainbow Revolution in India. The Rainbow Revolution focuses on the development of which sector? इंद्रधनुष क्रांति किस क्षेत्र में विकास पर केंद्रित है? एग्रीकल्चर सेक्टर, कृषि क्षेत्र में केंद्रित है.
In exam they may ask green revolution related to the focus on the food grains, white revolution related to the focuses on the milk, yellow revolution related to the oil seeds, blue revolution related to the fisheries, golden revolution related to the fruits. In exam they may ask, these are the very important questions. And silver revolution is related to the eggs, a round revolution potatoes, pink revolution meat, gray revolution fertilizers. Next, Vaijayantimala Amini Krishnamurthy were awarded the Padma Shri Award in which year? Vaijayantimala and Amini Krishnamurthy Padma Shri पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया था? 1968 is the correct answer. Next question. Who was the founder of the Maurya dynasty? Maurya वंश का स्थापक कौन था? Chandragupta Maurya is the correct answer. What was the capital city of the Mauryan Empire? मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्रा. Who was the last ruler of the Mauryan dynasty? मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहदत्ता. It is very important question. मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहदत्ता था. Who was the chief advisor of the चंद्रगुप्त मौर्य? चंद्रगुप्त मौर्य का प्रमुख सलाहकार कौन था? कौटिल्य, चाणक्य था. Thank you for watching. These are the key answers SSC GD 2025 examination February 4th, third shift, and some important question.